Hello and very good morning, students of class 6D. I hope you all are well. My dear students, today I just want to tell you that I will share all the question answers and MCQ in the PDF format. You need to write all the stuff on your computer interleave notebook. So today I just send you the PDF just after the class so that you can easily do the things, do the question answers on your computer notebook. And if you find any difficulty to understand anything, you are free to ask, my dear student. No need to worry. Now, my dear students, let's move on. My dear student, we have already discussing computational thinking, and we have discussed few of the aspects, components of computational thinking. In computational thinking, there are various components. Uh, various components of computational thinking are there are various components of computational thinking. The first I was tell you that analyzing. So I told you in the process of analyzing, I told you in the process of analyzing that we need to solve, we need to analyze the what is the exact problem. We need to analyze what is the exact problem. Analysis, we have to call this analysis. In the first step of analysis, we need to understand what is our problem. Under this step, we need to understand what is the problem. The first is we need to understand what is the problem. What is the what is our exact problem, and second is we need to understand what is our goal. What is our goal? And what is our goal? What is our okay? You know that in the process of analysis, we need to understand two things. First is what is the problem, and second is what is our goal. So I just told you one example that if you want to go Delhi to Mumbai, then our problem is to go from Delhi to Mumbai, and our goal is how we can reach. Okay, and how we can reach Delhi to Mumbai in a minimal efforts and the maximum result. This is our goal. So I hope you get the point. एनालिसिस माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो एनालिसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग चीजों को, प्रॉब्लम को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और ये समझते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और उसके लिए अपने गोल डिसाइड करते हैं कि इसको कब तक मुझे कंप्लीट करना है। एक डेडलाइन डिसाइड करते हैं, इतनी देर में काम डिसाइड कर लेना है मुझे, और इस काम को करने का क्या तरीका हो सकता है। We need to understand what is the best way to do this problem. This is called analysis. Second step is decomposition. Decomposition. My dear student, according to this step, we have to divide tasks into multiple चंक्स। बच्चों, हम लोग किसी टास्क को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे चंक्स में, यानी
small word, I just used to use small word, small chunks. My dear student, according to this, in decomposition step, we just need to divide all the work, big work, into small steps. Suppose I want to do go Delhi to Mumbai, then we have to do lots of work. We need to pack a bag, we need to book a ticket, we need to book a hotel, we need to take a cab. So all these things we need to understand. So if we try to do at once, it is not possible. अगर हम सारी चीजों को एक साथ करें तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग एक सारे काम एक साथ नहीं कर सकते. देन वी मेक अ चेकलिस्ट. हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? चेकलिस्ट बनाते हैं. उसमें डिसाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं वर्क को, हाउ वी कैन डू दिस. We decompose the things into small steps, like small task, like first task would be book a ticket, then second task would be pack a bag, third task would be uh, uh, you can say that hire a cab, fourth task would be you can say that book a hotel. So all these stuff are comes under a decomposition steps. Okay. Third step is pattern recognition. What is pattern recognition? We need to understand what is pattern recognition. Observing pattern, trends, and guideline and data which help to take or predict the outcome. My dear student, according to this pattern recognition, we need to just hold on. Okay, just hold on. Okay, just need a hold on, one little hold on. Sorry, my dear student. Under this pattern recognition is observing pattern, trends and data which help us to take or predict the outcome. ये definition है इसकी कि हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं और डेटा को समझते हैं और फिर इसका प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या आउटकम आएगा. जैसे माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम मुंबई जाने वाले होते हैं और हमें पता नहीं मुंबई में कौन सी जगह देखने लायक है, तो वी विल यूज गूगल एंड वी विल सी व्हाट इज द फेमस प्लेसेस that people used to see, and you will easily find out that there are various places like Juhu Chowpatty, like you can say that Siddhi Vinayak Temple, like Haji Ali's Dargah, and also we have to see Mumbai Film City. All these are places which Google will search. Okay, I just tell you how you will find this thing. Just wait for a second. Okay, I'll just tell you what is the meaning of this. So suppose I just want to share you the screen and I want to know what is exactly meaning of what is the meaning of this pattern recognition. So we just need to understand famous, most visited places in Mumbai, you can say that
I just open this website, and you can see that there are the most famous places to go. There is Gateway of India. This is situated in Mumbai. So you can see that. I'll just, with the help of pattern recognition, I can easily understand that the most people go to Gateway of India. So this is a pattern recognition. Then the second most famous place is Sanjay Gandhi National Park, Mumbai, and the third famous is Red Carpet Wax Museum, Mumbai. You can see that there is a wax museum which is present in Mumbai. So we will go there also. Then Haji Ali Dargah in Mumbai. You can see that this Dargah is situated in between the sea. And the fifth is Elephanta Cave, Mumbai. So my dear student, as you can see that there are, and then Siddhi Vinayak Temple, Mumbai, and Chhatrapati Shivaji Terminal, CST. So my dear student, these are the data which is available on internet, which is basically set the trend. Trend means we don't need to I mean invest our time to find out what is the best places to go. We just open the record, and we just open the Google, we just Google it, and the Google will tell you what is the most visited places according to the people. So this is how we have to get the answers, and we also understand then which place we need to go first, and we also find the best route. So that we have to reach there. This is called pattern recognition. I hope you get the point. You can see the map and all, and you will understand what is the best way to go visit any place. This is how we have to understand this pattern recognition. My dear student, I hope you understand this point. Now, my dear student, the fourth step is abstraction. The fourth step is abstraction. Fourth step is abstraction. What is abstraction? Abstraction क्या होता है बच्चों? Abstraction means the process of filtering the problem. Filtering the solution. The simple definition is process of filtering the solution. किसी solution को और filter करना क्या कहलाता है? Abstraction कहलाता है. Just like my dear students, as you can see that we just need to go Delhi to Mumbai. My dear student, I tell you on my yesterday class that if you go there, there are multiple ways. There are multiple ways multiple ways. So you have to save your money. First of all, you need to think: is any relative live there? If you live there, if your relative or friend live there, then it is very easy to survive there, because the reason is very simple. If you call your friend or relative, you no need to book a hotel, and also you have saved the money for transportation. That means you don't need to hire a cab as well. And also third thing, you don't need to book you can say that invest money on fooding and other stuff. So this is a very easy solution. So we need to understand abstract thinking, the process of filtering the solution. That means we need to save the money. So under this step, we will abstract. We thinking. We apply the abstract thinking, and we find out the solution in the best possible way. So this is the fourth step of abstraction. Now the fifth step is algorithm design. Fifth step is algorithm design. Now this is the last step, and for this components of computational thinking. And yesterday I was stopped from abstract thinking. I told you that I will teach you algorithm today.
What is algorithm? Algorithm is nothing but a step. Algorithm is nothing but to solve the problem into step by step by step process. We have to solve any problem by step process. That means we need to develop step by step approach so that we have to solve the problem. We need to solve the problem. Okay. So what is the algorithm design? Suppose I just want to make an algorithm to book a ticket. I just want to make an algorithm. I'll just, my dear student, I just repeat again. What is algorithm design? To solve the problem into step by step process. This is called algorithm. किसी चीज को step by step process में solve करना क्या कहलाती है? Algorithm design करता है. So my dear student, I'll just show you how to design the algorithm. Okay. Suppose I just write down the algorithm. Write the algorithm to book a ticket from Delhi to Mumbai. Okay, by train. So my dear student, there are various steps. So step number 1 is open the railway website और ऐप, या तो हम रेलवे की वेबसाइट खोलेंगे, ऐप खोलेंगे. इसके बाद स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट द डेट and place where we want to इसके बाद बच्चों हम लोग डेट और प्लेस सेलेक्ट करेंगे. फिर इसके बाद जहां हमें जाना है. इसके बाद थर्ड स्टेप होगा, स्टेप नंबर 3 इज सेलेक्ट द choose the multiple, you can say that, choose the train according to our budget. अपने सुविधा अनुसार हम लोग ट्रेन सेलेक्ट करेंगे. सपोज अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम लोग थर्ड एसी से जाएंगे, ज्यादा पैसे हैं तो फर्स्ट एसी से जाएंगे, स्लीपर लेंगे, रिजर्वेशन कराएंगे. ये सब चीजें हम लोग करेंगे ट्रेन सेलेक्ट करने में. इसके बाद स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 होगा पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट फॉर द टिकट. इसके बाद हम लोग टिकट का ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे. और माय डियर स्टूडेंट, लास्ट स्टेप क्या होगा? टेक द प्रिंट आउट और द पीडीएफ ऑफ द टिकट. ओके, हम प्रिंट आउट और टिकट का पीडीएफ ले लेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट, एक एल्गोरिथम देखिए क्या करते हैं. सबसे पहले हम लोग वेबसाइट खोलते हैं या वो ऐप खोलते हैं जिससे मुझे टिकट बुक करनी है. इसके बाद डेट और प्लेस सेलेक्ट करते हैं जहां मुझे जाना है. मैं सपोज मुझे 15 अप्रैल को जाना है मुंबई, तो डेट हो गया 15 अप्रैल 2022 और प्लेस हो गया मुंबई. देन
वी हैव टू सेलेक्ट द ट्रेन। मुझे इसका ट्रेन सेलेक्ट करनी होगी। ट्रेन सेलेक्ट करने का मतलब ये है बच्चों कि मुझे कौन सी ट्रेन सेलेक्ट करनी है। सपोज मुझे मुझे वंदे भारत सेलेक्ट करनी है, वो थोड़ी महंगी ट्रेन है। इसके अलावा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ गरीब रथ। इसके बाद मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी ट्रेन, मतलब राजधानी एक्सप्रेस। जो ट्रेन मेरे बजट में आएगी मैं वो ट्रेन सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। आपको पता होगा जो ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी होता है। तो आपको पता है जो फर्स्ट एसी होता है सबसे महंगा होता है, फर्स्ट एसी। तो सेकंड एसी, उसके बाद थर्ड एसी। सो वी हैव टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। अगर मुझे पास पैसा ज्यादा तो मैं फर्स्ट एसी सेलेक्ट करूंगा, तो पैसा कम है तो थर्ड एसी सेलेक्ट करूंगा। ओके, अगर अगर थोड़ा और ज्यादा पैसा है तो सेकंड एसी सेलेक्ट करूंगा। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं चीजें सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद जब ट्रेन सेलेक्ट हो जाएगी, इसके बाद मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी टिकट की। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा टिकट की, गूगल पे से या नेट बैंकिंग से, कैसे भी पेमेंट कर दूंगा। इसके बाद इसका पीडीएफ ले लूंगा टिकट का, या प्रिंट आउट, उसका प्रिंट आउट ले लूंगा। इस तरीके से बच्चों ये एल्गोरिदम मैंने डिजाइन कर दी। ये एल्गोरिदम है बच्चों, ये जो पांचों स्टेप है, ये दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। एंड माय डियर स्टूडेंट, यही होती किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। I hope you can understand this point, my dear student. So this is called algorithm design. So, my dear student, I hope you get the point. Now, my dear students, we need to understand one more aspect, that is making decision. So this is how we have to solve the problem. Now we need to understand what is decision making. What is decision making? What is decision? Decision making. Decision through. Sorry. Decision through reasoning. My dear students, you know that we need to learn, we need to understand that we are living in the world where we need to understand, take decisions. हम उस दुनिया में रहते हैं बच्चों जहाँ पे हमको डिसीजन लेना ही पड़ता है। ओके, देयर आर वेरियस वेज टू थ्रू डिसीजन। ओके, हमें कैसे डिसीजन लेना है। ओके, तो हमें पता है कि देयर आर टू पॉसिबिलिटी। इफ यू वांट टू if you want to cross the road, then you need to take decision. जब आपको सड़क क्रॉस करनी है तो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। जब आपको सड़क क्रॉस करनी है तब भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते तब भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जब आप किसी बिग प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते तब भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, you need to take decision according to our convenience, according to our experience. Okay, we need to take decision according to our condition, our experience और knowledge. हमें अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे अगर आपको सड़क क्रॉस करनी है, अगर आप छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी क्लास 6 में है, तो बच्चों अभी आपको सड़क क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट गुड at this point of time. You need any elder one with you to cross the road because there is a chance of accident. अगर आप छोटे हैं अभी तो आपको हमेशा अपने बड़ों की हेल्प देनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस कम है रोड क्रॉस करने का। ओके, कभी कोई भी बड़ी गाड़ी आएगी और काम तमाम कर सकती है किसी भी बच्चे का। इसलिए इट्स बेटर यू हैव टू टेक योर एल्डर्स एडवाइस। बट अगर आप बड़े हो चुके हैं, यानी आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, 20 साल, 15 साल, 18 साल, देन यू आर इजिली सेफली cross the road because you have a good experience.
आपको तब एक्सपीरियंस बहुत होगा, तब आपको रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव ऑन। Decision making are based on two things, that is experience and knowledge. More experience and more knowledge will always helpful to make decision. जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी और उतनी ही ज्यादा स्किल भी होगी, उतनी ही आपको हेल्प होगी डिसीजन लेने में। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, so there are two approaches to solve any problem. Okay, there are simple, there are two types of problem. First is complex, simple problem. The second is difficult problem. My dear student, आपको पता है एक सिंपल प्रॉब्लम होती है, दूसरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है। सिंपल प्रॉब्लम में मुझे कुछ खास टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है और आपको बहुत कम टाइम लगता है। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया 3 + 4 करो, तो आपको पता है 3 + 4 होता है 7। ओके, या मैंने आपसे कह दिया 12 - 6 करो, आपको पता है आंसर होगा 6। ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें आपको टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर अगर मैं आपसे कह दूं 12 × 4 + 6 divide by 2, then multiply, then make a +4 and make a big minus sign, and in the make a small bracket and say 9 + 6 - 3। सपोज ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो बनी बात है थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओके, सो अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो वी नीड मोर टाइम, it will take more time to solve this problem. Okay, and in simple problem we will say it will take less time in comparison with complex problem to solve the problem. तो कहने का मतलब इतना है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप और सिंपल प्रॉब्लम रिलेटिवली कम टाइम लगेगा in comparison with complex problem. So this is how we have to understand the thing. So my dear students, we just conclude this chapter from this point, and I hope you will understand this chapter. I will provide you the PDF at the end of the lecture. Thank you, class. All the best. Have a nice day. Thank you.